Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is Space and Satellite. Today we are going to review this chapter. हमने तमाम SLOs complete कर लिए हैं. Project भी बनाया हमने ऑन सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर. सो आज हम इसको रिव्यू करेंगे, तमाम रीडिंग पेजेस को, तमाम SLOs को, एंड बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू विद एन असेसमेंट शीट. सो लेट्स क्विकली रिव्यू द लेक्चर, बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली recap what we did in the previous lecture. So my dear students, what is a satellite? An object that is revolving around the planet is called a satellite. So did you learn to prepare satellite by cardboard? क्या आपने अपने घर में कोशिश की थी सैटेलाइट बनाने की थ्रू अ कार्डबोर्ड, थ्रू अ पीस ऑफ पेपर? तमाम रिसाइकलिंग मटेरियल से ये इजीली बन जाती है. सो डिड यू ट्राई इट? वेरी गुड. सो टेक पिक्चर्स ऑफ इट और अपने दोस्तों को दिखाएगा. प्रेजेंट योर मॉडल इन द क्लास. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इज द टाइम फॉर रिव्यू. सो वन बाय वन लेट्स क्विकली रिव्यू योर चैप्टर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्पेस के बारे में पढ़ा. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज स्पेस. स्पेस इज बाउंडलेस 3-dimensional रीजन जहां पर ग्रेविटी नहीं होती, जहां पर एयर नहीं होती. इट इज वैक्यूम. Okay, my dear students, so how does NASA work in exploration of space? What are its achievements? So my dear students, NASA की क्या क्या achievements हैं, किस किस तरीके से NASA ने जो है वो space technology और space exploration में help की है. So NASA ने जो है space shuttles launch की, satellites बनाई, communication में, GPS में, weather forecasting में, इसके अलावा moon पे पहले शख्स को भेजा. So these all things, these all milestones were achieved by NASA. So my dear students, now what is satellite? Satellite क्या होती है? An object that revolves around the planet is called a satellite. So what is natural satellite? So natural satellite is the moon, different moons of the planet. यानी कि जैसे कि अर्थ का एक मून है which is known as Luna. इसके अलावा जब जुपिटर के बहुत सारे मून हैं, मार्स के 2 or 3 मून्स हैं. So इस तरीके से they all are revolving around the planets. So these objects are known as satellite. So what are benefits of moon as natural satellite? So moon का benefit ये है कि ये हमें तारीखें बताता है. phases of जो moon है ये हमें डे एंड नाइट लोकेट करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा ये हमें जो डेट्स हैं उनको भी पता करने में हमें ये हेल्पफुल है. इस्लामिक कैलेंडर में तो हम देखते ही चांद को और उसके बाद जो है हम रमज़ान का हिसाब करते हैं, ईदों का हिसाब करते हैं, हज का हिसाब किताब होता है इस हिसाब से. सो दीज आर the benefits of moon as a natural satellite. So then we discussed about the artificial satellites. So what are artificial satellites? So the satellites which are sent by the human beings in the space and they revolve around the earth are known as artificial satellites. So what are the uses of artificial satellites? So artificial satellites के different uses हैं. ये communication में, GPS में, which is global positioning system, weather forecasting, इन तमाम कामों में नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं. सो देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट. सो इट्स इम्पॉर्टेंस क्या है सैटेलाइट की कि बगैर किसी रुकावट के आप तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं. जो डाटा सैटेलाइट से कलेक्ट किया होता है दैट इज़ मोर एक्यूरेट देन द ग्राउंड बेस्ड डाटा. सो दैट इज़ मोर एक्यूरेट एंड हैजार्ड फ्री सिस्टम है सैटेलाइट्स का. Okay, what are the key milestones in space and technology? ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई, टेलीस्कोप इन्वेंट हुई, स्पेस क्राफ्ट्स बने. इसके अलावा लोगों ने स्पेस में गए, स्पेस वॉक की, मून पे कदम रखा, मार्स पे लैंड किया. सो दीज आर डिफरेंट माइलस्टोन्स ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी आल्सो मेड अ प्रोजेक्ट. हमने सैटेलाइट का प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से यू कैन मेक योर ओन सैटेलाइट. Okay, my dear students, so now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and the roll number and then start doing the test है ये आपका, ठीक है? What is space? How did scientists make it possible to explore space? Write any 2 achievements of NASA. So difference between natural and artificial satellite. Natural और artificial satellite में क्या फ़र्क होता है? Then how does artificial satellites are better than ground based instruments? कैसे जो है artificial satellites बेहतर है ground based instruments से?
What are key milestones in space and technology? Write any three. So आपको कोई सी three जो milestones है आपको वो लिखने हैं. Okay. So quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 3 from section B given on page number 123 in your notebooks. And my dear students, in this chapter, we have learned that space and boundless three-dimensional dark vacuum where heavenly bodies exist. And NASA is an American government agency which works in space for science and technology. An object revolving around the planet is known as a satellite. And satellites are of two types, natural and artificial satellites. So moon is the natural satellite. It helps in lunar calendar and tidal energy. Then comes man-made objects that orbit around the earth are artificial satellites like geostationary satellites. And watching TV, weather forecasting, communication and GPS are all because of satellites. And so my dear students, I hope now you know all about space and the technologies. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.